in the direction of change in velocity. So what I mean to say that acceleration is also a vector quantity. Now, in the figure number 3.1, which is visible on your screen, there is a link OA. There is a link OA of length small r rotating on a circular path in clockwise direction as shown in the figure. It has an instantaneous angular velocity of omega radians per second. Instantaneous angular velocity of omega radians per second. Okay, and an angular acceleration of alpha radians per second square in the same direction. Clear? That is, the angular velocity increases in the clockwise direction. Now, when you come to this particular picture or the image, what will be the tangential velocity of point A? What will be the tangential velocity of the point A? The tangential velocity of the point A will be VA, denoted by VA. अगर मैं small से denote कर रहा हूँ, and you know it is nothing but omega of this link multiplied by the length of this particular link. In short interval of time, that is in a very short interval of time delta t, let OA assume a new position denoted by OA dash. Is it clear? By rotating through a small angle delta theta. That is, in a very short span of time delta t, the link OA rotates through an angle delta theta and occupies the point A occupies a new position denoted as A dash. Is it clear? Now, Yes, what will sir. be, Yes. now say, look, the link is having an instantaneous velocity of omega radians per second, but at the same time, the link is undergoing acceleration in the direction of the angular velocity. Okay, it means the speed is bound to increase. Okay. Therefore, what will be the angular velocity of OA dash? The angular velocity of OA was omega. The angular velocity of OA was equivalent to omega. What will be the angular velocity of OA dash? It's not going to be omega, something greater than omega, and it will be equal to omega plus alpha into t. Okay. Am I right? Right, sir. Yes, sir. Therefore, what will be the tangential velocity of the point A dash? This was the velocity of point A. What will be the tangential velocity of the point A dash denoted by VA dash? It will be equivalent to omega into r. Now the omega is from omega Into R. omega plus alpha t into R, sir. R. okay. Now the tangential velocity of A. Now the tangential velocity not of A. Sorry, the tangential velocity of A may be considered to have two components. One perpendicular to OA. One perpendicular to OA means the original position. See, these are the two components. This is equal to angle theta. These are the two components. One component is this, and therefore what I'm saying that it is having two components, or it can be assumed to have two components. The first component is perpendicular to the original position OA, okay, and the another parallel to OA or AO. Am I right? Right, sir. Yes, sir. So right now I'll be talking about change of velocity in a direction perpendicular to OA. Okay. I'm writing velocity, short form VEL लिख दिया. Velocity of A perpendicular to OA is equivalent to V dash. and V is nothing VA but this. minus. नहीं बेटा अभी अभी सुनो ध्यान से सुनो. अभी मैं सिर्फ जो नोटेशंस यूज करूंगा मैं वो अभी लिस्ट डाउन कर रहा हूँ. Okay. Similarly,
वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे ए लिखना भूल गया था मैं. ओके, वेलोसिटी ऑफ ए डैश परपेंडिकुलर टू ओ ए इज इक्वल टू क्या ये वी ए डैश कॉस ऑफ डेल्टा थीटा. Yes, sir. वी ए डैश इंटू कॉस ऑफ डेल्टा थीटा. Therefore, change of velocity, of course, perpendicular to OA is equivalent to this minus this. यही तो होगा ना? Yes, sir. VA dash cos of delta theta minus VA, or this will be equal to what is VA dash? Omega plus alpha t into R. यहाँ cos of delta theta, so the cos of delta theta, and what is VA? VA is equivalent to omega R. Omega. Therefore, rate of change means acceleration. Sorry, पता नहीं. Yes, sir. एक मिनट यार, इसको क्या? Okay. Therefore, what I am writing, acceleration of A perpendicular to OA will be equivalent to. Screen is not visible. That screen is Sorry. Is it okay? No, sir. It's still not visible. No, sir. क्या visible नहीं है आपको? No, sir. No, sir. क्या screen visible नहीं हो No, रही है? sir. No, sir. Still No, not. sir. शेयर ही No. नहीं हुई, शेयर ही नहीं हुई है हमारी। ओके, मैं फिर से एक मिनट. Now I hope it's visible. Yes, sir. Yes. यस अभी भी visible है ना? फिर गायब हो गया? यस Okay. So this is visible. I am talking about acceleration of A perpendicular to OA. This will be this equation divided by delta t. In the limit as delta t, in the limit as delta t tends towards 0, you know cos of delta theta will tend to 1. Therefore, what will happen to the acceleration? Ultimately, it will be equivalent to क्या कर रहा हूँ? When delta t tends to 0, R alpha. cos of delta theta will be equivalent. It will be equivalent to R into R alpha. वही मैं आप R alpha कह रहे हो, मैंने वो ये लिख दिया, चलो कोई बात नहीं. It is R alpha. And what is alpha? Angular acceleration. Angular acceleration, it means d omega by dt into. dt So the only thing that you need to keep in your mind that the acceleration perpendicular to the link whichsoever you are considering will be equivalent to length of that particular link multiplied by the angular acceleration of that particular link. ये आपको ध्यान में रखना होगा. Okay? Acceleration के दो component होंगे. The first one will be the
change in acceleration perpendicular to OA, or the other terminology that is used for this is known as the tangential component of acceleration. जो आपने R alpha लिखा है ना, this R alpha into R is also known as the tangential component of acceleration. Okay? क्योंकि इसके टेंजेंट है. Clear? Yes, sir. ओके तो बस आपको ये याद रखना है, जब भी किसी लिंक का टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन निकालना हो तो मुझे दो ही चीज चाहिए, एक द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लिंक एंड सेकंड द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ दैट लिंक, और कुछ नहीं चाहिए. क्लियर? यस सर. ओके अब दूसरे डायरेक्शन में बात कर लेते हैं. Change of the second is change of velocity parallel to OA. Now, what is the velocity of A? Velocity of A parallel to OA. Initially, it's 0. Yes, sir. Then velocity of A dash parallel to OA. This is equivalent to this. VA dash sin theta. Is equal to VA dash sin of delta theta. अब मैं तो बीच के स्टेप खा जा रहा हूं. Therefore, acceleration of A parallel to OA will be VA dash sin of delta theta minus 0, क्योंकि initially 0 है, divided by delta t. What is VA dash? VA dash क्या लिखा था हमने? क्या था VA dash हमारा? ओमेगा प्लस अल्फा. Omega plus alpha. ओमेगा प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू आर. साइन ऑफ डेल्टा थीटा 0 के मतलब ही नहीं रहेगा कोई डेल्टा टी. अगेन इन द लिमिट्स व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, साइन ऑफ डेल्टा थीटा विल बी इक्विवेलेंट टू डेल्टा थीटा. सो व्हाट विल बी द acceleration of A parallel to OA? It will be equivalent to omega r into d theta upon dt. And what is d theta upon dt? So it will be equivalent to omega square r. Okay, and this can be written as v square by r. Okay, so this component is known as the centripetal or radial component of acceleration. Okay. Now, अब एक छोटा सा सवाल है. If a link is rotating with a constant angular velocity, मैं दोनों इक्वेशन पहले आपके उसके लिए लिख देता हूं. Tangential component of acceleration is equivalent to r into alpha. Okay, and the centripetal or radial component is given as v square by r. Okay, now इन्हीं दो के से आपको जवाब मिल जाएगा. If a link is rotating with a constant angular velocity of omega radians per second, how many components of acceleration will it have? One, sir. One, sir. And that will be the Centripetal or the radial or the centripetal component of acceleration. Now, in some problems, what can happen?
the first link or the driver link, it will have only, or it will be rotating with a constant angular velocity. Okay, it means the driver link will have only one component of acceleration, and that will be the centripetal or the radial component of the acceleration. But it doesn't mean that the rest of the links will also have one component of acceleration. Even if the driver link is rotating at a constant angular velocity, the other links in the system, they will have both the components of acceleration. ये चीज हमेशा ध्यान रखना. Is it clear? कई प्रॉब्लम्स में ऐसा होगा कि ड्राइवर लिंक is rotating with an instantaneous angular velocity. It means it is also having some component of acceleration. वो अल्फा भी है उसके पास, ओमेगा भी है. तब उस केस में ड्राइवर लिंक के पास भी it will also have two components of acceleration, otherwise it will have single. अब देखो इस component, इसमें क्या दिखाया हुआ है? This is the ft for tangential component of acceleration. This is the radial, and this will be the overall acceleration of point A with respect to the center of rotation. Clear? अब इसको बनाते कैसे हैं? देखो, नॉर्मली अगर ये सेंटर ऑफ रोटेशन है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो वेक्टर हम बनाते हैं वो यहां से बनाते हैं और डायरेक्शन इस तरह से दिखा देते हैं. ओके, तो सेंट्रीपिटल में हम क्या करते हैं? इफ दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन, वी विल मूव फ्रॉम दिस वेक्टर का जो टेल होगा यहां से स्टार्ट होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन, एंड इट विल मूव लाइक दिस, जो इस केस में दिखाया हुआ है. दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन. ये तो ओवरऑल निकालने के लिए किया ना, तो पहले टेंजेंशियल ले लिया, ये ले लिया. अदरवाइज जब हम प्लॉट करेंगे यू विल कम टू नो. एनी डाउट इन दिस? आपको सिर्फ ये याद रखना है बेटा, v²/r एंड r into alpha, और कुछ नहीं याद रखना है. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. It is clear. Yes, sir. चलो मैं इसी एग्जांपल से आपको समझाता हूं. In this particular problem, a 4-bar link is given to you. आप ये मान करके चलो सबकी डायमेंशंस दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है. You are interested in finding out the acceleration of point C, the acceleration of point E, and so on. Okay? आपको E और F का acceleration आपको निकालना है. Now, through this graphical approach, now what is the first thing? We know that acceleration is the rate of change of velocity. It means dv by dt. It means the first thing that I need to know is the velocity. तो ये इसने वेलोसिटी बनाया हुआ है. इसमें कोई डाउट है? ये वेलोसिटी ट्रायंगल बनाया हुआ है, इसमें कोई डाउट है? अगर डाउट है तो अभी पूछ लो, अदरवाइज आई विल जंप टू दिस. इस पे क्या दिया हुआ है? देखो, द ड्राइवर लिंक इज हैविंग एन angular acceleration also in the same direction of the angular velocity. कोई डाउट है तो पूछो वेलोसिटी में, अदरवाइज आई विल कम टू द एक्सेलरेशन इमेज. फिगर को थोड़ा जूम इन कर दीजिए. बेटा फिर से बोलना, आपकी आवाज बहुत कम आ रही थी. हेलो Sir, she said figure को थोड़ा zoom in कर दो वो. Yes, sir. वेलोसिटी में कोई प्रॉब्लम है? वेलोसिटी इमेज में, दिस इज द वेलोसिटी इमेज. No, sir, no problem. Okay. If you don't have any problem, अब देखो इसमें कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में A, B, C, D जो भी था आपका कैप्स में यूज किया था या कैपिटल लेटर यूज किया था. वेलोसिटी इमेज में स्मॉल a, b, c, d यूज किया है. दैट इज द वे इट इज टू बी डन. अब जब एक्सेलरेशन इमेज बनाएंगे, दिस इज द फाइनल एक्सेलरेशन इमेज, उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा.
Now in the acceleration image, it can be either a dash, b dash or a1, b1. इस तरह से दिखाना होगा. Is it clear? Okay, sir. Now, there are two fixed points A and D. So on the acceleration image, again you will be having a single point to represent the fixed points A and D, and those have been represented by A1, D1. Clear? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now, DA is the driver link. Since it's having both the angular acceleration, apart from having the angular velocity in the clockwise direction, it is also having the angular acceleration in the clockwise direction. Therefore, it is bound to have both the components of acceleration. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं सबसे पहले लिखूंगा, I will find out FCBA. FCBA, centripetal component of or the radial component of acceleration of point B with respect to A, because for B, A is the center of rotation right now. आपको मालूम है सेंट्रीपिटल के लिए मैंने क्या लिखा था? FC is nothing but V square by R. तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ यूज करूंगा, वेलोसिटी ऑफ B with respect to A square divided by the length AB. Okay. The first Sorry? tick is for the magnitude. Sir, FC by BC. इसका क्या मीनिंग है सर? F से मैं एक्सीलरेशन दिखा रहा हूँ. C means सेंट्रीपिटल या रेडियल. कई ऑथर्स इसको C की जगह R यूज करते हैं. सेंट्रीपिटल या रेडियल है. इसका मतलब ये है. अब B A का मतलब है I am finding out the centripetal component of acceleration of point B with respect to the center of rotation A. Okay. Right, sir. Got it, sir. Now from the velocity diagram, you know what is the velocity of point B with respect to A. उसको आपने मेजर किया, जो भी आपका मैग्नीट्यूड आया, जो भी आपका वैल्यू आई, उसका आपने स्क्वायर किया, डिवाइडेड बाय AB कर दिया. So the first tick is for the magnitude and the second tick is for the direction. The direction is also known to me. The direction is also known to me. It will be parallel to this link through the center of rotation. This is the center of rotation A1. Magnitude आपको पता है. Choose a scale for drawing the acceleration vector. Okay. Place your after one arm parallel to this, the another arm will be perpendicular. यहाँ मुझे अभी perpendicular से कुछ नहीं करना, parallel से करना है. Come to the center, draw a vector. This vector is drawn parallel to this particular line, and this represents the centripetal component of acceleration of B with respect to A. This is the arrow, direction of arrow. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Now, since this link is undergoing angular acceleration also, the second component, this was the first, the second component of acceleration will be Ft, or the tangential component of acceleration of B with respect to A, and it will be alpha of this link, alpha AB multiplied by AB. Alpha is known to you, AB is known to you. It means you are having a vector. The first tick for magnitude, it's known, and the second tick for direction, it's also known. It should be, since it's the tangential component, it should be tangent to this particular link. And if it is tangent at this point, okay, it should be tangent at this point. यहाँ से जहाँ आपका centripetal component खत्म हुआ, since the angular acceleration is acting in the direction of velocity, okay, आप देख रहे हो तो आपको लग रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा है, clockwise डायरेक्शन में जा रहा है. So from this, I've drawn a vector like this. This is representing FTBA. Clear? Sir, excuse me, sir. Sir, tangential component है तो वो तो किसी डायरेक्शन में भी जा सकता है ना? किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है. Yes, so means हम कोई भी डायरेक्शन बना सकते हैं. किसी भी डायरेक्शन में, मैं अभी किसी भी डायरेक्शन में लेकर के मैं लेके जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो मेरा वेक्टर है, इट इज फुल्ली नोन टू मी. मैग्नीट्यूड भी पता है, डायरेक्शन भी पता है. ठीक है. अब डायरेक्शन क्या हो रहा है, ये मैं इसको इस डायरेक्शन में कर दूं, इसका मतलब मालूम है क्या होगा? The link instead of being accelerated, it is subjected to deceleration. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. ये चूंकि इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए मैंने भी ये इसी डायरेक्शन में बनाया है. Yes, अब इसके बाद मेरे को किसी भी
हाँ बेटा, बट Want to रेडियल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर ही होगा ना? सर सेंट्रीपिटल के तो सेंट्रीपिटल कंपोनेंट के तो परपेंडिकुलर ही बना है ये, यहाँ पे भी तो ये परपेंडिकुलर ही है। वही मैं पूछ रहा था कि वो मतलब ऐसे परपेंडिकुलर ही ड्रॉ होगा ना। हाँ बेटा, ये नेचुरल बात है, ये परपेंडिकुलर ही है। आप जो मैं ड्राफ्टर यूज का मेंशन करना भूल गया। अगेन सेट योर ड्राफ्टर वन आर्म पैरेलल टू दिस, द अदर आर्म विल बी परपेंडिकुलर, कम टू दिस पॉइंट। इसको जब हम बनाते हैं तो इसको नॉर्मली एक्स कह देते हैं, ठीक है। दिस इज द पॉइंट एक्स, यहाँ से मूव किया और वेक्टर ड्रॉ कर दिया, and the length of this vector will represent the magnitude. So यहाँ तक आ गया। Now this is representing the centripetal, this is the tangential, but what is the overall acceleration of B with respect to A? तो आप क्या करोगे? A पॉइंट को B1 से जोड़ दिया, this vector जो कि यहाँ पे दिखाया है, this will represent the overall acceleration of B with respect to A. ये वाला एक कंपोनेंट ही है, एक कंपोनेंट ही है। दिस इज द ओवरऑल एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर? यस सर, एज लाइक अ रिजल्टेंट। या जस्ट लाइक अ रिजल्टेंट, यू आर राइट। देखो, क्योंकि अगर किसी को कंफ्यूजन है तो इससे पहले वाले में भी यही था। देखो, ओ सॉरी, इसमें भी तो यही था, जस्ट लाइक अ रिजल्टेंट। सर Yes, sir. हेलो सर, क्या बोलिए सर? तो सर एम आई ऑडिबल सर? या डेफिनेटली यू आर ऑडिबल। सर मैं पूछ रहा था कि सर जो आपने सर ये टेंजेंशियल कंपोनेंट बनाया सर, इसको आपने जो पहले जो वो बनाया था सर, सेंट्रीपिटल कंपोनेंट बनाया था सर, उसके हेड पे क्यों बनाया सर, टेल पे क्यों नहीं बनाया सर आपने पहले की तरह सर? यानी कि तो पहले मतलब सर एडी से आप पहले सो रहे थे, इसका मतलब है। जब मैं आपको बता रहा था कि सेंट्रीपिटल हम सेंट्रीफ्यूगल जब बनाना होगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन बनाना होगा तो सेंटर से अवे बनाएंगे। तो सेंट्रीपिटल का जस्ट ये इस ड्राइंग में नोटेशन ये है, अगर ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, अगर मुझे सेंट्रीफ्यूगल बनाना है तो अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंट्रीपिटल है तो जस्ट सेंट्रीफ्यूगल का ऑपोजिट होगा, इसलिए मैं सेंटर ऑफ रोटेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आऊंगा। नहीं सर, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ सर, मैं इसका टेंजेंशियल का पूछ रहा हूँ सर मैं। हाँ, सर टेंजेंशियल को सर आपने उस पे बी पे क्यों बनाया सर, डी पे क्यों नहीं बनाया सर आपने? अब आप इस डायग्राम को देख लीजिए। सर बात तो वही है ना सर, जैसे ए के परपेंडिकुलर ना हो फिर ओ के बनाओ सर। हाँ, तो सर आपने ऊपर क्यों नहीं बनाया? आप जो आप बात कह रहे हो वो जो देखो, आप हो क्या रहा है, आप अगर ऐसे कर रहे हो या इस तरह से लेकर, सॉरी यार, एक चल क्यों नहीं रहा है, इसमें जा रहे हो या ऐसे जा रहे हो, आपको तो रिजल्टेंट से मतलब है ना। हाँ सर। इसने आपको दोनों तरीके से बना के दिखा रखा है। इसने आपको दोनों, हिल गया, इसने आपको दोनों तरीके से बना के दिखा रखा है। मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो सारे ऑथर्स ने अडॉप्ट किया हुआ है, नथिंग मोर देन दैट। ओके, यस सर। आप देखो उस जो पहला वाला फिगर है, आप अपने बुक को रेफर करना, देखो उसमें दोनों तरीके से उसने बना के दिखाया रखा है। ओवर तो टोटल या रिजल्टेंट एक्सीलरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे को सिर्फ जो अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन है, उससे मुझे सिर्फ एक ही फायदा मिलना है कि आई कैन फाइंड आउट द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लिंक। सो वी हैव लोकेटेड द पॉइंट B1। ओके, इस डायग्राम में देखोगे, इसमें ये वाले सारे जो आपके इरेगुलर या डॉटेड लाइन से सबको हटा करके इसने फाइनल दिखा रखा है। ये है, दिस लाइन is nothing but this line, and this line is giving you the overall acceleration of B with respect to A. Clear? Yes sir. Now come to the second part, that is मैंने A लोकेट कर लिया, D लोकेट कर लिया, B लोकेट कर लिया है। A, D एंड B लोकेट कर लिया, मतलब जब मैं एक्सेलरेशन पे कहूँ तो B ही कह रहा हूँ, इसका मतलब B1 कह रहा हूँ। लोकेट कर लिया मैंने। Now my next intention will be to locate the point C. Okay, for point C, again B is the center of rotation. If B is the center of rotation,
it will have two components of acceleration, FC, CB, and that will be equivalent to velocity of C with respect to B square divided by CB or BC. Velocity of C with respect to B, ये दे रहा है, ये वाला वेक्टर दे रहा है, यहाँ से आपने मिल दिया. It means you know the magnitude, you know the direction. This was the first component. The second component will be FT CB. That will be alpha of the link CB multiplied by the length of the CB. लेकिन ये आपको पता है? No, sir. No, sir. It means you are having half information. And what's that half information? You don't know the magnitude, but you know the direction. Direction क्या है? It will be always perpendicular to this component. Okay? तो मैं यही concept use करूँगा. This is my point B. Okay? Yes, sir. Or CB is the center of rotation. I'm going to plot this component FCCB. जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वेक्टर डायग्राम देख के लग रहा है कि बहुत कम है. B is the center of rotation. Since it's the centripetal component, it will move away from B in this direction parallel to the arm CB. FCCB इसने ये बना दिया. ठीक है, let this point be Y. Okay? जो भी मैग्नीट्यूड आया उस हिसाब से उसने वेक्टर का लेंथ एडजस्ट किया, जो भी स्केल लिया है. This is the point Y. He has drawn FCCB. Okay? Clear? Yes. Yes. Now, for plotting this, since I don't know the magnitude, और मुझे ये भी नहीं मालूम है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, या रिटार्डेशन है या एक्सेलरेशन है, but I only know the direction. डायरेक्शन भी प्रिंसिपली जानता हूँ कि it should be perpendicular to this component. इस component के perpendicular आपने एक line of infinite length नीचे की ओर भी बढ़ा दो, कहीं भी बढ़ा दो. ठीक है, इस तरह से आपने ड्रॉ कर दिया. That is perpendicular to this component. Okay? Clear? Yes, sir. जितना कह रहा हूं बस उतना ही ध्यान दो बस. Now again, as in the velocity diagram, point C can't be located only with one center of rotation. For locating the point C, D was also required. So the same case is going to be followed over here. For C, D is also the center of rotation. Therefore, I will find out the first thing, that is FC, centripetal or radial component of C with respect to D, and it will be velocity of C with respect to D square divided by CD. Velocity of C with respect to D, this vector, measure कर सकते हो. It means you know the magnitude, you know the direction. The second component, when C is rotating with D as a center, will be FT CD, that will be equivalent to alpha CD multiplied by CD. Since this is not known to you, this is known, it means you are having an half information. And what is half information? The half information is that you don't know the magnitude, but you are aware of the direction, that the direction of this vector will be perpendicular to this vector. Clear? Yes, sir. Now, first of all, I will be plotting CD. For CD is the center of rotation, therefore the centripetal component उसका जो भी length होगा, it will start from D, move parallel to CD in the downward direction, जो इसने ये दिखाया है. Okay, let this be the point Z, जहां तक इसने आपने बना दिया. दूसरा component जो tangential है, you know that the tangential component should be perpendicular to the centripetal और the radial component. आपने एक लाइन इस तरह से इसे perpendicular बना दी. अब देखो, ये लाइन भी perpendicular आपने बनाई थी, and this line was also for finding out the tangential component of C with respect to B, and this line is also drawn perpendicular with respect to this vector, and this line is for the tangential component of acceleration of C with respect to D. लेकिन C तो एक ही point है ना, it can't have two different. तो ये दोनों जब tangential component of acceleration जहां पे intersect करेंगे, ये यहाँ पे जहां intersect करेंगे, that will be the position of point C. That will be the position of point C. Got my point?
ये Yes, वाला, sir, got it. ये वाला और ये वाला जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे, that will be the position of the point C, and on the acceleration image it will be denoted by C1. ये देखो यहां पे आ गया. ओके Yes, sir. Yes, sir. अब F के लिए क्या करें? सेम कॉन्सेप्ट इज टू बी अप्लाइड. कॉन्सेप्ट कुछ नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ आपको अप्लाई करना है. फिर से किस तरह का लिंक है ये? इतना तो मैंने बता ही दिया था. इट्स अ टर्नरी लिंक. टर्नरी है कि नहीं? दिस इज Yes, sir. Binary link. ओके. नाउ देखो, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, वेदर यू आर ट्राइंग टू लोकेट इट ऑन द वेलोसिटी इमेज और ऑन द एक्सेलरेशन इमेज, यू नीड 2 पॉइंट्स. ठीक है. नाउ we assume that F is rotating with respect to B at this moment. It means I am interested in finding out FC, FB. It will be velocity of F with respect to B square divided by FB. Velocity of F with respect to B. ये वेक्टर हो गया. It means you are having the magnitude and you are also aware of the direction. Direction क्या होगा? Parallel to this, since it's a centripetal, away from B. B से देखो किधर की ओर जा रहा है ये? F इसने लोकेट किया है कि नहीं? इस पे किया है. ये इस डायग्राम में ना करके इसने यहाँ पे कर दिया है. देख रहे हो ना? इस डायग्राम में इसने नहीं बनाया है क्योंकि यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेशन हो रही थी, इसने इसलिए सेपरेट बना दिया है. So and the second component of acceleration will be Ft Fb. That will be alpha Fb into Fb. You are not aware of this. You are aware of this. It means half-baked information is available to you. यहाँ से मुझे जो वेक्टर पूरा पता था, I have drawn this. This is representing Fc Fb. Okay. और ये चूंकि because I was not having any information about the magnitude, I know that its direction. Direction क्या है? It is perpendicular to this vector. इस तरह से बना दिया of infinite length. Now in the second go, when F is rotating with C as the center of rotation, I will find FC. That will be velocity of F with respect to C square divided by FC. Velocity of F with respect to C, this is the vector. It means you know the magnitude, you know the direction. The second component will be Ft, Fc. This, since it is equal to alpha Fc into Fc, you are not knowing about this acceleration. It means half-baked information. You don't know the magnitude, you know the direction. अब जो पहला वेक्टर आप प्लॉट करोगे ये वाला, it for this C is the center of rotation. Therefore, this vector will be drawn parallel to Fc through C as the center of rotation in this particular direction. Where is C? ये है, ये ड्रॉ किया. This is representing Fc, Fc और दूसरा परपेंडिकुलर, ये वाला इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. जहां ये दो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट किए, that is the position of point F1. Is it clear? Yes, sir. हो गया. ठीक है. अब आपको जब भी बनाना होगा तो आपको ये नहीं है, दो तरह इस वाले डायग्राम की ज्योति नहीं, आप जो कुछ भी करोगे इसी पे करोगे. अब आपको क्या करना है, आपके इस लिंक इस मैकेनिज्म में, ये कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में जो जो चीज आपको लिंक दिख रही थी वो सॉलिड लाइन से बना दोगे. देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी को फॉर्म लाइन से बना दिया. देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन बी एंड सी, बी और सी को फॉर्म लाइन से दिखा दिया. देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन सी एंड डी,
C एंड D. D कहाँ है? ये वाला जी। C और D को आपने फॉर्म लाइन से ज्वाइन कर दिया। F और C के बीच में कनेक्शन है, देखो F और C के बीच में कर दिया, F और B के बीच में कनेक्शन है, इसने इस तरह से कर दिया। ओके, इसके अलावा ये ड्रॉ एज लाइट एज पॉसिबल, जितने हल्के हाथ से बना सको, H2H से ज्यादा ऊपर नहीं जाना है। ओके, और ये आप चाहो तो यहाँ मैं कह दूंगा HB से भी बना लो। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब Yes, sir. अगर मैं आपसे पूछा होता व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट C, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट C, तो आप क्या करते? आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट C, जस्ट मेजर दिस वेक्टर फ्रॉम दिस टू दिस, एक लेंथ आएगी। ओके, उसको स्केल से मल्टीप्लाई कर दिया एंड यू आर नोइंग द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट C। अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट F, ठीक है, तो आप क्या करोगे? F को मैंने सिर्फ पूछा व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ F, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट F। पॉइंट F को स्टेशनरी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, देखो जो इसने ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि मेरे इससे देख के लग रहा है कि सवाल में पूछा गया है। ठीक है, इस वेक्टर को ज्वाइन किया, इसके लेंथ को मेजर किया और जिस स्केल पे भी आप बना रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल गेट द एक्सेलरेशन ऑफ F। अब इसमें भी उसी तरह से देखते हैं कि क्या हमने F पॉइंट जो है एक्सेलरेशन इमेज में सही लोकेट किया है। अगेन द मेथड इज सेम, रीड फ्रॉम B, कम टू F, मूव टू C। BFC कौन सा सेंस जा रहा है? क्लॉकवाइज। BFC क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम। Yes, अब यहाँ sir. देखो BFC क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम, Yes, sir. जा रहे हैं कि नहीं? It Yes, means sir. the point F has been located in the right way. क्लियर? उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछता फाइंड आउट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द लिंक CD, तब आप क्या करते? सोच के बताओ। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा CD। To calculate, measure the value of CD. Measure the value of vector of CD. बेटा इस इमेज पे देखो, मैं जरा सा इस इमेज को साफ कर दूं, बहुत सारी मैंने यहाँ पे चीजें लिख दी हैं। So we have to calculate the alpha CD by, sir, the measuring the value of resultant of CD. So that the resultant vector we have drawn. The value of C1 and CD point. In diagram, that is C1 and CD एक point. मिनट, just listen to me. This vector is giving you the overall acceleration or the resultant acceleration of point C with respect to D. Yes, sir. Am I right? And for this resultant you are having two components. बेटा किसी के घर से ना बहुत डिस्टर्बेंस है बैकग्राउंड में। And for this resultant you are having two components, one is the centripetal and the another one is tangential. अब मैं C और D के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहा हूँ। This is the centripetal component and from here to here it is the tangential component. तभी तो ये resultant हुआ ना, देखो। So what you will do, आपको मालूम है FT CD can be written as alpha CD into CD. FT CD आपने यहां से यहां तक मेजर कर लिया, स्केल से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज X आया, therefore alpha CD into CD, therefore alpha CD will be nothing but X divided by CD. Clear? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. बस यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है। देखो यस सर तो आप लोग कह रहे हो, लेकिन अगर घर में बेटा आपने प्रैक्टिस नहीं किया है ना, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी व्हाइल ड्राइंग इट। Still any doubt in this question, or should I move to the another? Let's move to the slider crank mechanism. अब यहाँ पे देखो क्या दिया है। Am I audible? Yes, sir. Yes. Now here the crank OA is rotating with an angular velocity of omega radians per second in the clockwise direction. Nothing has been mentioned about. Angular acceleration, sir. Angular Angular acceleration. acceleration. Yeah. So how many components of acceleration it will have? One. Only one. Only And that will be the centripetal FCAO. It will be velocity of A with respect to O square divided by OA. मैं इस सब डायग्राम की बात ही नहीं करूंगा, आपको ये आना चाहिए। The fixed points are OG, तो इसने O1 G1 ले लिया। Centripetal component, it will move parallel to this, start originating from O, move in the downward direction. This is the centripetal FAO है, actually it is FCAO है, लेकिन एक ही component है, therefore this will be the overall component of acceleration of A with respect to O. Clear? ठीक है ना? Yes, sir. Now coming to the link AB. Coming to the link AB, for BA is the center of rotation. It will have two components, FC, BA. That will be velocity of B with respect to A square divided by AB. Velocity of B with respect to A. This is the vector which is giving you the velocity of point B with respect to A. Known in magnitude, known in direction. Even if the driver link is rotating at constant angular velocity, all other links are bound to have two components. कभी ये एक्सीलेट कर रहे होंगे, कभी ये रिटार्ड कर रहे होंगे। FT BA will be alpha BA into AB. Since this is not known to you, you don't know the magnitude, you know the direction. First of all, we'll be plotting FCBA. For B, A is the center of rotation. Therefore, this vector will be drawn parallel to this with A as the center of rotation and moving in this particular direction. ये draw कर दिया इसने. Okay. This is representing FCBA. FTBA, I don't have the information about the magnitude, but I know the direction, that the direction should be perpendicular to this vector. इस वाले के नीचे की ओर भी एक्सटेंड कर दो आप, आपको तो नहीं पता कि इधर ही जाएगा। Okay. Now, when B is on the slider itself, how many components of acceleration will it have? When the point B is on the slider. क्या चीज? One. कौन सा? Zero, sir. जीरो किसने कहा भाई? Sir, one horizontal direction. One. एक ही कंपोनेंट होगा, जो भी चीज से देखो, when B is on the slider it means it's having a straight line motion, और जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो उसका सेंटर ऑफ रोटेशन कहां पे होगा? इनफाइनाइट पे होगा, इन्फिनिटी पे। Yes, sir. और जब मैं लिखता हूं कि FC इज इक्वल टू V स्क्वायर VR, अब जब R ही आपका इनफाइनाइट नंबर होगा तो ये क्या होगा? ये जीरो हो जाएगा कि नहीं अपने आप? इट विल बी क्लोज टू जीरो। Yes, sir. So any link which is having a straight line kind of motion will have only one component, that is the tangential component. The tangential component parallel to the line of stroke. This is the line of stroke. ड्राफ्टर इसके parallel सेट किया, फिक्स पॉइंट पे आए और दोनों डायरेक्शन में आप बना दो। अब B के लिए आपने ये भी बनाया, B के लिए आपने ये भी बनाया, जहां पे इंटरसेक्ट किया, that is the position of point B. Got my point? Yes, sir.
आज मैं आई एम गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर। जो मैंने आपको कराया है इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पूरे चैप्टर में। फिगर्स अलग हो सकती हैं लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। जस्ट ट्राई टू गो थ्रू। इवन कोई भी बुक उठा लो, किसी के सॉल्व एग्जाम्पल ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट यही चलेगा। अब हाँ, अब आपसे पूछा जाता व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिंक ए बी, तो कहां से पता लगता है? दिस इज द सेंट्रीपिटल। देखो, this vector is giving you the overall acceleration of the point B with respect to A. तो अब इसका ये इसी वेक्टर को मुझे ध्यान में रखते हुए इसका सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल चाहिए। दिस इज द सेंट्रीपिटल, दिस इज द टेंजेंशियल। फॉर फाइंडिंग आउट द एंगुलर एक्सेलरेशन आई नीड टू कंसंट्रेट ऑन टेंजेंशियल। तो मुझे मालूम है FTBA is equal to अल्फा BA into AB। FTBA यहाँ से दिया हुआ है, therefore alpha BA will be FTBA divided by AB। मिल गया मेरे को? क्लियर? सो Yes, sir. बेटा थोड़ी देर रुको, मैं अटेंडेंस आपकी ले लूं, उसके बाद आई विल अलाउ यू टू लीव। Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए। सर हम से ये डायरेक्ट FBA क्यों नहीं मेयर कर रहे सर यहाँ से? सो वो भी तो एंगुलर एक्सेलरेशन ही है लिंक BA की। एक मिनट पहले मैं ना, एक मिनट, आपका अटेंडेंस डाउनलोड हुआ है नहीं वो चेक कर लूं, वो भी मुसीबत है ना। हाँ पूछिए, क्या पूछना है? Those who are interested in listening to his question can stay or they can go. Others can go. मैं पूछ रहा था सर, जैसे आप सर वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लगा के सर अल्फा AB निकाल रहे हो यहाँ से, तो हम सर डायरेक्ट रिजल्टेंट मेयर करके FBA क्यों नहीं निकाल रहे? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बेटा इसका फर्क बस यही है, एक फोर्स ऐसे लग रही है, दूसरी फोर्स ऐसे लग रही है किसी एक बॉडी पे, ठीक है? एक फोर्स ऐसे लग रही है, तो मैं पूछूंगा इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या, तो रिजल्टेंट तो ये हो गया ना। यस सर। ये तो रिजल्टेंट दे, रिजल्टेंट को रिजॉल्व किया है ना दो में, और जो मेरा टेंजेंशियल है उसी से मेरे को अल्फा मिल सकता है, क्योंकि जब भी सिस्टम में अल्फा होगा तो टेंजेंशियल आएगा। जब यहाँ पे अल्फा नहीं था तो टेंजेंशियल आया ही नहीं था। यस सर, तो सर हम वही कैलकुलेट कर लेंगे ना, जो जिसमें एक होगा तो वो एक वाला ही कैलकुलेट हो जाएगा, मेयर कर लेंगे। एक वाला होगा तो हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं इसका पूछने की मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है, इसका एक ही चीज है, इसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट। यस सर। दैट इज द ओवरऑल कंपोनेंट। अब इसके दो कंपोनेंट में स्प्लिट हो ही नहीं रहा है, तो मैं इसका टेंजेंशियल मैं पूछूंगा ही नहीं, इसका टेंजेंशियल पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मुझे इसका टेंजेंशियल पूछने के लिए कंडीशन था कि इस पे अल्फा होना चाहिए था, अल्फा होता तो डायग्राम ही बदल जाता, ठीक है? फिर ये इस तरह से हो जाता, और फिर ये अगर इसमें अल्फा होता तो तब ये FC AO हो जाता है, और ये FT। और सर मेरे को एक चीज बताइयो कि सर आप क्या क्वेश्चन पूछोगे जब हम FBA मेयर करेंगे, मतलब रिजल्टेंट मेयर करेंगे, किस क्वेश्चन? बेटा मैं तो पूछूंगा जब भी नहीं, जब मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सम पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट, हाँ, तब आप रिजल्टेंट मेजर करोगे। अगर मैं आपसे किसी लिंक का एंगुलर एक्सेलरेशन पूछूंगा तब आपको टेंजेंशियल मेजर करके फॉर्मूले में लगाना पड़ेगा। यस सर, गॉट इट सर। गॉट इट? यस थैंक यू सर। Thank you, sir. Okay, I am leaving the meet, huh? Thank you, sir. Welcome, बेटा। सर Welcome. Thank you.